Direct and indirect narration. Another synonym of narration is speech. So we say direct and indirect speech, or direct and indirect narration. So direct and indirect narration, or direct and indirect speech. Both speech and narration are used synonymously. That's why in some book they use speech, and another book they use narration. However, both are the same things, because when we narrate, so we also speak. Speak, it is verb. Speech, that is noun. Speak is verb, and speech, that is noun. Similarly, narrate, it is verb. Narration, that is noun, abstract noun. So don't get yourselves confused by using speech or narration. Direct and indirect, when we use these two terminologies, so you can say narration or you can say speech. You have studied direct and indirect speech, like active and passive voice, for the last 2 decades. 2 decades. 10 years or 20 years or 15 years, you are studying direct, indirect, active, passive. But even today you need it to understand. Why? Because we learn things mechanically. We learn things mechanically, like machine. Now machine, computer, it needs input and output comes out. So you then need data, programming, software, hardware. So we work like machines, like animals. And we do not go into details that why it is called direct, why it is called indirect, why it is speech. Is speech the same as narration? And the purpose is communication. The purpose is the use of language. The purpose is not just learning these things mechanically. As I have told you many times, that there are 4 approaches and 4 methods to learn any language. So please make a comment that there are 4 approaches and 4 methods to learn any language. What are the 4 approaches? Number 1 is classic approach. Number 2 is direct approach. Number 3 is structural approach. And number 4 is communicative approach. So there are 4 approaches. What are these 4 approaches? Number 1, classic. Number 2, direct. Number 3, structural. And number 4, communicative. These are the 4 approaches. And in the sequence that I am telling you these names, historically, these 4 approaches were developed as per this sequence. Number 1 was classic. Classic is used for Greek, Latin, Sanskrit, the ancient languages. We use the word classic for them. So this was classic approach. Now what was the method of classic approach? The method of classic approach was called GTM. GTM. Grammar Translation Method. Grammar Translation Method. Even today in Pakistan-like countries, we use grammar translation method. We learn grammar, we translate, and we learn English, Urdu, and other languages. So the approach is classic. The method is GTM, Grammar Translation Method. Then the second, direct approach, and the method is also called direct. Direct approach means immersion of ESL like mother tongue. That you use immersion, immerse yourself, plunge, jump yourself in the environment of ESL
English as a second language like your mother tongue. You go to London, you go to Washington, you go to Australia, New Zealand, and you speak English, you listen to English, so automatically you learn English. So in direct method, it is not allowed to translate or use second language. For example, now I'm speaking purely in English, so this is the method which is direct method. If you are listening to me continuously, so one day you will understand me and your own English will become fluent. When I went to Spain for the first time and I started learning Spanish language, they did not use a single word of English while teaching us Spanish. And we did not know a single word of Spanish. But they used direct approach and direct method. For example, if they would say, sit down, so they would say, siéntate, siéntate. Stand up, levántate. And they would use like words, levántate, siéntate, how are you? So they would say, how are you? So in Spanish they would say, ¿cómo estás? So direct, no translation, no grammar. So that's why I became proficient in Spanish just in 3 months, because the environment, direct method was so effective. Now the most modern approach and method is communicative. Communicative method and communicative approach. Communicate, speak, write, continuously, convey your message. You should be more active and safe too than listening to me. This is communicative method. Go to safe to, write there, speak there. Don't listen to Naeem Khan or don't listen to a teacher so much. Just do your own work. Be fluent. One day you will be accurate. Communicative approach means that first fluency, then accuracy. And communicative approach is also based on mother tongue. When a child is learning mother tongue, so we don't teach him grammar or correcting him, this, do that. He or she, the child is speaking and writing. And from mistakes, he himself or she herself understand that this is good and this is not good. And one day, he or she becomes fluent in the language plus accurate. We don't make mistakes in our own language because we understand that with practice, with passage of time, though we make mistakes while children, but when we grow up, without reading a single book of grammar, without attending a single class of language, we become fluent and accurate as well. So this is why I'm always telling you, please be active and safe too. Be active and safe too. If you are sincere with yourselves, be active and safe too. Write there and speak there. So now we come to our main topic, which is direct and indirect narration. So please make a comment that I must understand how to quote the speaker and how to not quote but convey the message. Please make this comment. I must know how to quote the speaker and how not to quote the speaker but convey the message. Hello? So please make this comment. I must know how to quote the speaker and how not to quote the speaker but to convey the message. This is direct and indirect speech. As Haris Jamali has written, I must understand how to quote the speaker and how not. When we quote the speaker, so it is direct. And when we convey the message without quoting him or her, this is called indirect. This is the difference. Naeem Khan says,
नईम खान कहता है, ठीक है। तो नईम खान के एग्जैक्ट अल्फाज क्या है, तो उन एग्जैक्ट अल्फाज को मैं कामों में बंद करूंगा, डबल कोट्स में बंद करूंगा। आई विल पुट दैट इन डबल कोट्स सो दैट दीज वर्ड्स अपीयर डायरेक्टली हिज और हर वर्ड्स। अगर आप कोई बड़े लेवल के बंदे हो, छोटे लेवल के नहीं हो, और सोशल मीडिया पे एवं स्क्रोलिंग नहीं करते, तो अगर आप अच्छी स्पीचेस सुनते हैं ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो कभी कभी स्पीकर कहता है कोट अनकोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोट अनकोट। कोट मैं उसकी बातें कर रहा हूं, ये उसके अल्फाज है, मेरे नहीं है। अनकोट वो कोट खत्म हो गया, अब मैं अपनी बातें कर रहा हूं। मसलन मैं अरस्तु की बात करता हूं या आइंस्टाइन की बात करता हूं, तो अगर मुझे आइंस्टाइन के एग्जैक्ट वर्ड्स याद है तो वो मैं डबल कामों में बंद करूंगा, ताकि ये लगे कि ये अल्फाज उसके हैं, ये मेरे नहीं है। अगर मैं उसको डायरेक्ट उसके अल्फाज को कोट नहीं करता, तो फिर मैं उसको डबल कामों में बंद नहीं करता। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। अच्छा, इसमें वजह यह है कि ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कहते हैं यार भाईजान ये उसके अल्फाज है और उसने एग्जैक्ट ये अल्फाज बोले हैं। मैं उसको कोई तशरीह नहीं करता या इनडायरेक्टली आपको नहीं बताता। डायरेक्ट उसके वर्ड्स आप तक पहुंचा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है और आप डायरेक्टली के बजाय इनडायरेक्टली उसके पास कहते हैं, सो दैट इज योर चॉइस। नाउ इन सम एरियाज डायरेक्ट स्पीच इज प्रोहिबिटेड, टोटली प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, in Presi, you cannot make direct speech. Please make a comment that while doing Presi, direct speech cannot be used. If there is direct speech in the original paragraph, so you have to convert that into indirect speech. While doing Presi, direct speech cannot be used. मैंने कल पैसिव वॉइस में आपको कहा था कि हम एकेडमिक लैंग्वेज में पैसिव वॉइस यूज करते हैं। सो अभी मैं पैसिव वॉइस यूज करता हूं। While doing Presi, direct speech cannot be used. Okay? While doing Presi, direct speech cannot be used. अब पाकिस्तानी स्टाइल क्या है, वो खामखा डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं या एक्टिव वॉइस। तो वो ये कहते हैं कि वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट स्पीच इन प्रेसी। तो वी को खामखा लाना, प्रोनाउन को लाना जो है वो एक्टिव वॉइस है। सिमिलरली इन एकेडमिक राइटिंग, इनडायरेक्ट स्पीच इज रिकमेंडेड। Indirect speech is recommended. When you have to quote the person, अगर उसके एग्जैक्ट अल्फाज आपने कोट करने हैं और आपको डायरेक्ट अल्फाज याद भी है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट स्पीच करते हैं। On safe side, we should use indirect speech, क्योंकि इंसान को याद नहीं होता कि उसके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे। अगर हमने डबल कामों में, डबल कोट्स में उसको बंद किया, तो इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्ट उसके अल्फाज है। सो दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी और बंदे के अल्फाज जो है कहते हैं। अदरवाइज इट इज प्लेजियरिज्म। ये जो है प्लेजियरिज्म है, नकल है, झूठ है। अल्फाज उसके नहीं है और आप उसके अल्फाज उसको लोगों को कह रहे हैं। ठीक है, कभी कभी लोग ये करते हैं।
अगर आपकी बात कोई नहीं मानता तो आप ये कहते हैं नईम खान कहता है कि ये करो, तो हो सकता है फिर वो मान ले। बहुत से लोग ये कहते हैं खुदा ये कहता है, पैगंबर ये कहता है, ठीक है, पैगंबर खुद भी बात कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी खुदा कहता है कि ये काम इस तरह करो, तो फिर लोग उसको सीरियस लेते हैं कि यार खुदा का फरमान है, फिर तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सहाबी जो है कहते नहीं पैगंबर कहता है कि ये करो, तो ताकि लोग उसको सीरियस ले ले। आइंस्टाइन ने इस तरह कहा है, अरस्तु ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, ठीक है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। So this is the philosophy behind direct and indirect speech. Now the rules are quite clear. I have given you notes and I have answered all the questions in the notes, the pertinent questions. Rules are very clear. उसको तो आपको एक दफा 10 मिनट जो है ना दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रूल्स है, ठीक है। He says डबल कोट्स में पहले कामा, he says के बाद कामा, फिर डबल कोट्स कामा, I am busy now, डबल कोट्स क्लोज, फुल स्टॉप, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं, he says that he is busy। अगर वो said है उससे पहले तो उसको आप told भी कर सकते हैं, said भी कर सकते हैं। he said that he is busy अगर अभी की बात है, प्रेजेंट की, पास्ट की बात है, so he said that he was busy। तो ये इतना, या has been, had been, has, have, वो आपने चेंज करने हैं according to the person and according to the tense। So it is not so complicated, but you have to do a lot of practice so that you can remove the quotes and you can put that। आप इसमें that जब डालोगे तो वो डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। So I hope you got the point. Now we continue the same yesterday topic, or let us change it to another current issue, cricket. Pakistani cricket in the World Cup, because it may be appealing to you, although I don't like cricket myself, and sometimes we see because of friends and because of the situation, and also to have an interesting topic for writing. So Pakistani cricket defeat and from Afghanistan and from India, this is the scenario. Two people are talking to each other, Mr. A and Mr. B, or Madam A and Madam B, Miss A and Miss B, they are talking to each other. So please write a dialogue in direct and then convert that into indirect. So first make a sentence in direct and then make the same into indirect. So let's start the practice. If you don't like cricket, so use some other topic, Palestine, global warming, poverty, economy of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, Nawaz Sharif, the arrival of Nawaz Sharif, कोई भी टॉपिक। पर्पस क्या है? योर प्रैक्टिस। If you don't like any topic, just start writing generally, but you must participate. Practice से मत डरे. This is very important. Practice will make you perfect. जो चीज आप 1000 लेक्चर में सीखते हो वही चीज आप 10 मिनट के प्रैक्टिस से सीखते हैं। 1000 hours of listening and reading is equal to 1 hour of writing and speaking, because this is practice. Hurry up, we have limited time. At least write one sentence. He says, or the captain of Pakistan says.
After the sad defeat of Pakistan cricket team in World Cup 23, we were sitting in a hall with friends. Kashif says, it is not possible for Pakistan to reach to the finals. Okay, excellent. अब इमरान खान इसको indirect में लिखो. Egypt has arranged the Cairo summit for peace in Palestine. Cairo summit has arranged by... No, this is active passive. You are confused. Today our topic is direct and indirect narration. Not active passive. Active passive was yesterday. वो तो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स को पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो. अभी बच्चों की क्लास तो नहीं है कि हम एक्टिव पैसिव पे जो है ना पूरा हफ्ता लगाएंगे. टीचर का काम है आपको आइडिया देना, ब्लूप्रिंट देना, आगे चलना आपने खुद है. So Egypt has arranged the Cairo summit for peace in Palestine. अब इसको अब इस तरह करें ना कि the peace summit for Palestine has been arranged by Egypt. फिर ये पैसिव वॉइस होगा. Has been arranged by Egypt. Abdul Ghaffar, I like cricket. Mr. A said that he liked cricket. हाँ बिल्कुल, अपने कोटेशन हटा दिए, कामा हटा दिया और साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा दिया. ये पता नहीं साइन ऑफ इंटरोगेशन इसमें क्यों है यार अब्दुल गफ्फार साहब. इस साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने क्यों लगाया है? आप अपने हर वर्ड और हर सेंटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए राइटिंग मुश्किल काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू रीच टू द फाइनल्स, काशिफ सेड. करेक्ट. ये इंटरनेशनल स्टाइल है. पाकिस्तानी स्टाइल में ये है कि काशिफ सेड को हम पहले लाते हैं. काशिफ सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू रीच टू द फाइनल्स. ये टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. लेकिन जो इंटरनेशनल है आजकल मॉडर्न इंग्लिश, उसमें ये दैट की जरूरत नहीं है. जैसे कि इमरान खान ने लिखा है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, दैट के बगैर है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट नहीं है. रहमान A says Afghanistan defeated Pakistan, it was upset. रहमान आप भी गड़बड़ कर लेते हैं यार. कोई उम्मीद पैदा हो जाती कि कोई बंदा हमारे लिए कोई गुड न्यूज लाएगा. लॉस, लॉस, LOSS. लॉस इज नाउन, लूज इज वर्ब. आई लूज, मैं हारता हूं. दिस वॉज माई लॉस, ये मेरी हार थी. तो लॉस, LOSS, लॉस नाउन. LOSE लूज, हारना या गुम करना. लूज, LOOSE का मतलब क्या है? सुस्त. ये मेरा कोटेशन है मशहूर कि लूज लूज, जो हारता है वो सुस्त होता है, इस वजह से हारता है. लूज, LOOSE, लूज लूज. सो दैट वाज अपसेट लॉस. अगर ये क्रिकेट की लैंग्वेज में है, क्रिकेट पार्लांस, तो ठीक है, वरना अपसेट लॉस नहीं होता. और अब लॉस लॉस है और अपसेट भी अपसेट है, तो दोनों इकट्ठे आप यूज नहीं कर सकते. द कैप्टन सेड टू हिज मैन, स्टैंड एट ईज. द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज. वेरी गुड अब्दुल गफ्फार, करेक्ट. Professionally correct. India's captain claimed that they will win the World Cup. India's captain said we will win the World Cup. बिल्कुल ठीक है. आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया है. करेक्ट. ये भी कभी कोई क्वेश्चन आता है. So please read the notes on direct and indirect. Continue your practice.
in SAF to make sentences your own and then convert it. This is your writing practice as well as your learning of direct and indirect. अगर पहले से वो सेंटेंसेस बने हैं ना और उसी को आप कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ये है कि आप खुद अपना सेंटेंस बनाएं और खुद उसको चेंज करें. इससे से आपकी अंग्रेजी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी. अब ये दोनों ठीक है, इंडियन कैप्टन या इंडियाज कैप्टन, इंडिया का कैप्टन या इंडियन कैप्टन, दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा जो सही लगता है वो इंडियन है, इंडियन कैप्टन. ग्रामर में दोनों ठीक है, लेकिन रिवाज जो है वो इंडियन कैप्टन का है, इंडियाज के बजाय. और इससे और भी बेहतर जो है कैप्टन ऑफ इंडिया, कैप्टन ऑफ इंडिया. Nawaz Sharif arrived yesterday in Pakistan and he said he would finish. He said that he would finish that. अगर दरमियान में said आ गया तो उसका that जरूरी है. He said that he would finish the poverty soon. But Imran Khan said that Nawaz Sharif was very corrupt. CORRUPT. सईद करप्ट का स्पेलिंग देखो क्या लिखा आपने. Corrupt, CORRUPT. Corrupt politician, POLITICIAN. Politician. When he came into power. The man was coming. He said that the man had been coming. Correct. Very good. Excellent, guys. Now see you in